Hello, hello. This is the Mahadify episode number 2828. Today's date is 6th of August 2023. It's almost like a night at 9:47 p.m. Okay, so like basically now I was actually doing this YouTube, and there is a kind of like a thing that I know about the YouTube. Like I just realized that key people are watch YouTube. First is a creator and there is a viewer. All right, creator means the person who create the video for the YouTube. Viewer is actually the whatever the video creator makes, viewer watch that video. Okay, in YouTube there are almost like a 99% of viewer and 1.1% is creator. Okay, if you look at the kind of like something really entire number. Okay, so viewer is actually higher. As a creator, right now I am a creator, and I am actually making videos, all right, for the YouTube. But it's wrong. The concept is wrong, the basic structure is wrong. Okay, you are not making videos for YouTube. No. YouTube is just a medium. You are making videos for the people. You have to understand that. What do you mean by that? Like, let me tell you one thing. I am doing this YouTube for almost like a 2 year. Okay, I am not earning any money. I am like almost 30, living with my parents. Yeah, I am very pathetic person. All right, yes, agreed that thing. So problem with this thing that he right now I'm going through a lot of problems. Okay, so since I'm going through a lot of problems, I won't be able to create content. What do you mean by that? Won't be able to create content? I'm creating content. Like, I'm actually uploading videos for every day or every second day. So I am uploading videos. So I am creating content. Yeah. No. I'm not talking about that. What do you mean by that? Like basically ना, आप समझ लेते हो कि कोई बंदा काम कर रहा है और कोई बंदा प्रिटेंड कर रहा है. प्रिटेंड कर रहा है मतलब मैं आई डोंट रियली गेट इट. ओके, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. ओके, क्या होता है ना कि एज ए यूट्यूब, ओके, यूट्यूब is basically like, why is this YouTube is made for? Okay, like the creator, the person who is actually created the YouTube, what is the main purpose? Like why they like why this platform is exist? Like what is exactly the motive? What is exactly the motive for this site, this website? What exactly is this thing? This thing is that the person who has a kind of like something really interest in something, they can make videos and they can upload that video. So basically what I'm trying to tell you, when the person is interested in something, the having that much interest in that thing, the expression of that person is something really different. What do you mean? I just don't really get it. You just whatever the things that you are saying now, I don't really get it. Okay, let me tell you one thing. You are making this gaming content. Okay, बट डूड यार, तूने इतने वीडियोस अपलोड किए, ऑलमोस्ट लाइक 200 प्लस वीडियोस दैट यू आर अपलोडेड. ओके, उस एक भी वीडियो में तेरा इंटेंशन ही नहीं है डूड. यू आर गोइंग थ्रू जस्ट टेलिंग अ स्टोरी दैट कि हाँ ऐसा करना है, एडिटिंग फास्ट किया है, एवरीथिंग. बट डूड, व्हेन यू प्ले द गेम यू हैव टू फील द गेम ना. फील द गेम यानी क्या होता है? फील द गेम यानी क्या होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, साले बंदर इसको मार दिया, बेंचो दन 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 मारता. सो बेसिकली in the commentary, I do the commentary, yeah, but in the commentary you have to feel that कि हाँ तूने कुछ fuck up किया है, तो you have to express those things. Okay, and express loudly.
Okay, so that's why people can relate with that thing. Okay, so that is a one thing. Okay, और ये कब आता है, ये कब आता है जब आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड है. So does that mean कि I am not interested? No, I am interested, but I didn't really know the process because I played this game multiple times. So it's kind of like something really obvious thing for me. But you are making it wrong. You are thinking in very wrong way. Okay, think about that. Key, you have an interest, and having that interest, you have to show them on the video that people can connect. Okay, you are making videos for the people, not for the YouTube. You just have to understand, like how many videos that you make that you are broke, you are things, and this is not work out. Important thing is that key, just do it. Okay, just make it. Okay, like let me tell you one thing what exactly happened. Okay, so I just watch video about Mr. Beast. Okay, so when I watched the Mr. Beast video, I already knew कि when I watch the Mr. Beast video, I feel really excited. I feel that कि हाँ इस वीडियो में इस this video is actually worth of my time. Okay, then I then I was scrolling so many videos, and there is a video that Mr. Beast has a brother, and he made a video about his brother that he whatever. Okay, so I just realized that his brother is also doing a YouTube. So I click on this link, and I realized that dude, his brother is also making the same kind of content like Mr. Beast does. Okay, Mr. Beast is actually a younger brother of him. He is older. He is a younger. Okay, Mr. Beast is younger, but like I don't wanted to watch his videos. I don't know why. Like I just don't really feel that I don't know. I just not really connect with that person. Yeah, I just don't really connect with that person. So why should I watch the video? Okay, like basically I seen the link in the description box. I click there, and I just no, it just doesn't really get it. Okay, so that makes me understand that he as a community comes from the YouTube. Okay, what do you mean by that? Like don't push yourself too hard कि मेरे को व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, मेरे को व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे वगैरह वगैरह. सो यू आर स्टार्टेड शेयरिंग दिस थिंग. यस्टरडे आई वाज थॉट दैट कि चलो मैं प्रमोट कर लेता हूँ. ओके, 320 रुपये लगेंगे, बट मुझे करीब 11,000 सॉरी करीब करीब 60,000 से इम्प्रेशन होगा, करीब 10-20 हज़ार व्यूज़ आएंगे. सो माइट बी इट्स गुड. सो मैंने सोचा कि चलो ये कर लेते हैं. ओके, बट दैट इज़ नॉट. Putting your videos as an ad on YouTube doesn't make you kind of like a get a views. No, उससे तेरी community नहीं बढ़ेगी. You have to realize that thing. It's really essential. Okay, आप viewers को force नहीं कर सकते कि मेरा वीडियो देखो. No, not at all. Okay, अगर उनको अच्छा लगा वीडियो, obviously they will like, subscribe, they do whatever it is. Okay, you just have to make good quality videos. That is really essential, really essential. Okay, like कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे वीडियो में क्या है, कैसा है, कौन है वगैरह वगैरह. नो. ओके, तुमने किसको शाउट आउट दिया या किसने तुमको ये किया, नथिंग रियली एट ऑल. इट्स रियली एसेंशियल कि भाई तू जो वीडियो बनाता है ना, उस वीडियो की क्वालिटी एकदम बेस्ट हो, तभी कम्युनिटी बढ़ती है यार. कम्युनिटी की एंगेजमेंट बढ़ती है. पीपल आर ट्राई टू थिंक दैट कि हाँ द आई वॉच हिज वीडियोज़ एंड रियलाइज दैट कि हाँ. और इसमें ये भी नहीं है ना डूड कि मेरे को हर दिन वीडियो अपलोड करना है. नो नो, नॉट एट ऑल. क्योंकि लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हेन यू अपलोड वीडियोज़ every day or things like that, you will lose the quality. Okay, and I realize that. Okay, so it's just like that na, कि you have to make kind of like something really very good quality video that people can connect. Okay, don't really think that कि हाँ मुझे हर दिन वीडियोस अपलोड करना. लाइक लेट मी, लास्ट ईयर मैंने ऐसा किया ना, द एंटायर ईयर आई वाज अपलोडिंग वीडियो एवरी डे. क्या हुआ मेरे साथ? कुछ भी नहीं हुआ ना.
Okay, my subscriber from 11 to goes to 42, 42, 43 maybe. Yeah, ये कुछ भी नहीं हुआ, nothing really at all. Like I get almost like a 5 to 6 view, but nothing really happened. I was losing the quality of the video. Dude यार, it is really essential कि तेरी quality में focus कर. Okay, quality में that is really essential. Okay, whatever the video that you make, the video has to be kind of like a something really best for them कि उनको उनका टाइम वर्थ ऑफ स्पेंडिंग लगे. जो भी बंदे मेरे वीडियो देखेगा दे फील दैट कि हाँ चलो इसका वीडियो देखूंगा मैं, ताकि मेरा लाइक इट हैज़ टू बी स्पेंड गुड टाइम गुड. दे हैव टू गेट समथिंग, दे हैव टू गेट सम सॉर्ट ऑफ वैल्यूज इन टू इट. ओके, सो दैट्स वाई क्या हो गया था ना आज, लाइक लेट मी टेल यू वन थिंग कि आई वॉज एक्चुअली रिकॉर्ड माई वीडियो. ओके, आई रिकॉर्डेड माई वीडियो बिफोर द लंच. ओके, then after the lunch like I can do edit. Okay, I can easily do edit, but it's just like that ना कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था. I don't know why. Because of that कि I just ate in the lunch I ate just too much. Okay, and I was too sleepy too kind of like a something really after slump, so I went to the sleep. Okay, and then I went to the workout. I came एंड आफ्टर द गेम आई जस्ट थॉट दैट कि चलो एडिट स्टार्ट करते हैं. मैंने एडिट भी किया. ओके, फर्स्ट पे से एडिट भी शुरू कर दिया मैंने, बट इट जस्ट लाइक दैट रियलाइज दैट कि नहीं यार मेरे राइट नाउ आई डोंट हैव दैट मच मूड. ओके, बट डूड यार ऐसे मूड करके कैसा हो गया यार. इट्स लाइक बेसिकली ना लाइक आई ओके आई एम नॉट सेइंग दैट कि चलो तेरे को हर दिन अपलोड नहीं करना, हर दिन वीडियो अपलोड नहीं करना है. ओके, बट प्रोक्रेस्टिनेशन डूड, या प्रोक्रेस्टिनेशन ऑल्सो रियली नॉट दैट गुड ना. क्योंकि अगर तू प्रोक्रेस्टिनेशन करेगा ना तो व्हाट यू एग्जैक्टली इज दिस थिंग कि यू विल एक्चुअली अपलोड 2-3 days वीडियो इन लाइक ऐसा हो जाता है ना. फिर क्या होता है कि यू आर एक्चुअली काइंड ऑफ लाइक अ यूज्ड टू विद दिस प्रोसेस. ओके, like basically the good quality of video that you can upload every second day, but you are thinking that कि नहीं यार चलो every second day is also bit really tight, so maybe I will upload every third day or every fourth day. So it became used to. So you are started losing your lots of time and you don't have a time now, dude. You just have to understand. Okay, so it's not about every second day. It's about that कि when the video is done. Okay, when the video is done soon as possible, but not that much. Okay, तेरे को edit करना है edit कर ले, but try to be in kind of like a something really good mood. Okay, so basically what exactly happened after the workout, I started sit in front of my desk and started doing editing. Okay, while I was editing I was realized that कि यार मैं किस तरह से बनाऊँ and I was starting doing editing, base editing वगैरह वगैरह, but then I realized that कि नहीं यार मेरा मन नहीं कर रहा है आज. Okay, so I just started watching some sort of videos. So I took the break, then I ate my dinner. Okay, right now making artifact episode. After the artifact episode, should I make a video? No, I will not make a video. Should I like make video myself? I will start doing something edit, but I don't know. Okay, yeah, like basically I'm not like अभी मुझे कल वीडियो अपलोड करना है ना, एंड आई नो दैट कि टुमारो आई विल अपलोड दैट वीडियो. आई एम डेफिनेटली श्योर दैट कि टुमारो आई विल अपलोड दिस वीडियो. ओके, द एडिटिंग इज ऑलमोस्ट लाइक बेसिकली फर्स्ट पेज की एडिटिंग तो हो गई है. ओके, एंड द गेम प्ले इज नॉट दैट मच बिग. ओके, क्योंकि माई एंटायर गेम प्ले इज डन इन ऑलमोस्ट लाइक 30 minute. ओके, तो मेरे सारे काट पीट करके भी एवरीथिंग आफ्टर द एडिट माइट बी इट विल डन इन लेस दैन 10 minute. ओके, 5 to 7 minute is good, but it has to be pacing is fast. Okay, one thing, another thing कि after the edit, okay, after the every video is done, after say yeah subscribe and everything, try to add humor नहीं, ब्लूपर इज़ रियली एसेंशियल. क्योंकि ब्लूपर से क्या होता है कि लाइक बेसिकली ना वीडियो तो ख़त्म हो चुका है. ओके, यू से लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल है ख़त्म. ओके, आफ्टर दैट दिस इज़ योर टाइम. ओके, जो भी 1-2 मिनट का है ना उसका ब्लूपर बनने से क्या होता है कि जो भी बंदे लास्ट तक देखेंगे ब्लूपर भी देखेंगे, दे आर एक्चुअली सीइंग
दैट कि यू आर एक्चुअली पुटिंग ह्यूमर इनटू इट. ह्यूमर यानी क्या होता है कि जब आप ब्लूपर्स देखते हो तो आप काइंड ऑफ लाइक फील्स लिटिल बिट ऑफ फनी. ओके, ऐसा हो जाता है. सो it added value. Okay, they feel that they are literally connected with me. Okay, क्योंकि वो ब्लूपर का ही जो वक्त होता है ना, उसमें नहीं क्या मैं ऑडियंस से कनेक्ट हो पाता हूँ. ऑलराइट, सो दिस इज रियली एसेंशियल. सो आई विल ऐड ब्लूपर. ओके, so this is it. This is the end. This is the some sort of trick. I don't know, yaar. Like YouTube is actually going through a lot of stuff. So right now I just feel that na कि हाँ कि like like almost I was uploading videos for almost like the last 2 year. Okay, I started YouTube as August 2021. It's 2023, almost 2 year. It's almost 2023. It's almost like a 2 year. And या 2 साल की ग्राइंडिंग करने के बाद आई रियलाइज दैट कि हाँ चलो थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है. ओके, थोड़ा बहुत रियलाइज हो रहा है कि कैसा करना है, क्या करना है, वगैरह वगैरह. एंड देयर इज़ अ वन थिंग आई एम गोना श्योर इज दैट कि हाँ कि आई विल बी अ सक्सेसफुल. आई कैन सी दैट, आई कैन सेंस दैट कि हाँ आई नो आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट. Okay, the whatever the effort that I'm putting is, it will definitely work. Yeah, don't really worry about the current situation right now. Don't really worry about that ki the things is actually happened. Don't really worry about that. Just focus on the thing, just do it. Okay, that is really essential. All right, yeah, this is a good talk. Okay, but artifact episode haven't done yet. All right, I have so many questions to talk about. Key personal development question. These are the questions are really essential. Like I sought these questions. I actually those questions are actually like they meant to be. If you ask this question to yourself for personal development, so yeah, and it actually work. It actually like I'm going through a lot of things and goals and things like it's really good. So where am I? Your values definition. Okay, yeah. So what is your definition of success? Okay, definition of success, like how you see that key, what is exactly the success you will get, what type of success. Okay, what do you mean by type of success? You just have to understand कि everyone has a different type of success. Different type of success यानी क्या होता है? Okay, success तो एक ही होता है ना, like having a money, having a car, okay, having a kind of like a big house, एक अच्छी लड़की से शादी, maintain with the relationship. So is this success? Yeah, like from the outer layer, बाहर से हाँ ये success है, but like if you from looking from the inside ना, तो success is literally different from people to people. Okay, let's talk about it. So this is my part of success. What is exactly the success I'm thinking is that कि यूजुअली हाँ मैं पैसा चाहता हूँ, ये चाहता हूँ, वो चाहता हूँ, वगैरह वगैरह, ठीक है या. बट माई पार्ट ऑफ सक्सेस इज दैट कि आई विल नॉट स्टॉप इफ आई गेट सक्सेस. और लाइक बेसिकली मेरे लाइफ में कभी सक्सेस में कभी होऊंगा ही नहीं. आई थिंक दैट वाई, बिकॉज ऑफ दैट कि आई हैव सो मेनी थिंग्स टू अचीव. ओके, बस यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए. ओके, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय लाइक सक्सेस का मतलब होता है ना कि लाइफ में सेटल हो जाओ. हाँ चलो, लाइक हाँ मैं लाइफ में कभी ब्रेक लूँगा, लाइक आई विल टेक अ ब्रेक. ओके, आई विल टेक अ ब्रेक फॉर दिस थिंग दैट थिंग वगैरह वगैरह, बट ग्राइंडिंग तो चलती ही रहेगी डूड. आफ्टर द यूट्यूब, आफ्टर आई स्टार्टेड माई बिल्डिंग माई ऐप एंड एवरीथिंग, वो तो ग्राइंडिंग चलता ही रहेगा. Okay, so getting a success means like putting the full stop in your life and that's it. You are already got the success and that's it. Like let me explain to you कि कुछ लोगों के लिए ना कि सक्सेस क्या होता है कि हाँ चलो मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर दी है, अभी मेरे पास मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, अभी मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है. ओके, राइट नाउ दिस सैलरी. ओके, सो पीपल आर
पुट द स्टॉप. लोग ने ना अपनी लाइफ में स्टॉप लगा देते हैं एंड दे आर इज स्टक, देयर ग्रोथ इज स्टैग्नेंट. ओके, लॉट ऑफ एफर्ट टू. And why I'm actually kind of like something really wife and kids having a priority. uh, like okay, so is that ना कि ये थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है, बट क्या कि लाइफ में क्या होता है ना, आई वॉज एक्चुअली अलोन फॉर almost entire life. Okay, like I was actually started recording this artifact episode for 8 years, and the reason for this thing because of that कि I don't have anyone to talk. Okay, मेरे पास ऐसा कोई था नहीं जिससे मैं बात करूँ. Okay, and before the artifact episode is also alone. Okay, yeah, like I was actually with the so many people. हाँ, मेरे पास दोस्त थे वगैरह वगैरह, but still ना कभी कभी ऐसे हो जाती है ना कि the things that you wanted to say is kind of a bit embarrassed, and you can't say that to the friends even. So that's why I just built this artifact episode, and I was really alone. Okay, I never really experience kind of like a sharing things. जब भी आप शेयर करते हो बातें किसी के साथ, I never really experienced that. Okay, I never really have any girlfriend. I never really have anything kind of like a friend that I am kind of like something really close to. कि हाँ मैं मेरा दर्द खुद बता सकूँ उन लोगों को. I didn't really have that. Okay, but when I will have my girlfriend and wife, I will talk to her. I will spend so much time on talk to her. Like there are so many things. I don't know, yaar. Like maybe I was too. Shayad I was actually thinking too much, but I don't know, yaar. Okay. And during this, like from like till now, till the age of this 30, uh, I never really seen कि हस्बैंड वाइफ में रिलेशन कितना अच्छा हो सकता है. Like I seen the toxic relation every time. Like my father and parents, my parents are prime examples. Okay, they are actually fighting all the time. Okay, I don't know, yaar. I just don't want to talk about this thing. Okay, it's just like this is a kind of a very personal thing to me. Okay, what do you mean by success? Success means to be कि हाँ मैं पैसा तो कमाने वाला हूँ. Okay, so कितना पैसा कमाने वाला हूँ, it doesn't mean that much sense. Okay, पैसा तो मैं कमाऊँगा और बहुत ज़्यादा ही पैसा कमाऊँगा. Okay, हाँ मेरे पास गाड़ी भी होगी, घर भी होगा. Okay, but this is kind of like a something really a usual things that everyone is actually
थिंक दैट ना कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या होगी, तो हाँ दिस इज़ द थिंग्स आई विल हैव इट, ओके, बट देर इज़ ऑल्सो अनदर थिंग इज़ दैट कि मेंटेन रिलेशनशिप विथ माई वाइफ, किड्स, एंड बीइंग काइंड ऑफ लाइक अ emotionally happy and confidence all the time. Okay, so this is the success that I want. Okay, yeah, this is the success that I'm thinking. All right, next question. How do you handle the failure, dude? I am handle How do you handle the failure? Like, can you see my situation right now? Just the I'm gonna tell you my situation. I already explained, but still I am also okay. I am 30, almost 30. Like, it's August. Next month, I will be complete 30. Okay. Life के 30 साल बर्बाद, आई एम नॉट सेइंग बर्बाद, ओके, बट लाइफ के 30 साल हो गए. ओके, आई डोंट हैव एनी जॉब. आई एम लिविंग विथ माई पेरेंट्स. ओके, like basically na, just almost like a couple hours ago, my father's friend came and he says that his daughter is got a he became a doctor, and his son is also kind of like doing a medical, and he will be a doctor, will be in next 1 or 2 year. So the things that that person says to my father is very confidently, but my when he asked that ki what is your kid doing, then my father says that ki like he was doing YouTube, like there is no word, okay, like being making this YouTube and kind of like something really, okay. So when I see into my eyes of my father, I seen the failure. I ये बहुत बड़ा दर्द होता है ना, क्योंकि आपके पेरेंट्स को शर्म आती है लोगों को बताना कि आपका लड़का क्या कर रहा है, ओके, और जिसमें वो कर भी रहा है उसमें वो कुछ भी नहीं हो रहा है. Like, I'm not getting any views, or I'm not getting any money at all, just making videos and that's it. Okay. Like, I can see the failure of, like I can sense that कि हाँ मैं एक failure right now at this situation. Yes, I am kind of like a very failure. Okay. So, and I am, how do I handle this thing? Very perfectly, yeah, dude. Okay, I wake up, I make a video, I just, in that video I put a lot of energy, effort. During the editing I put a lot of effort and energy. I go to the workout is actually make me that कि हाँ चलो मुझे active रहना है, क्योंकि even if I didn't really work out, then I think that कि हाँ चलो life is really pathetic, no, I have to do workout, so I do workout, I came, I do edit, I sleep. So failure, how do I handle the failure? This is the kind of like a failure I'm going through. Every day is kind of like a fail. Every day from the COVID na, from COVID, every day is failure for me. Okay, every day is failure. मेरे दोस्त जॉब पे लग गए, they actually move away. Right now in Wardha, I am the only one here. जो भी मेरे सारे दोस्त थे, बादल, प्रशिक, पिंटू, विशाल, वैभव, everyone got away. Okay, Rahul is still here, but he also got a job in Wardha too. He is a police department. Okay, Pravesh, Vicky Bhau, everyone got a job. One man, he also have a job. He have a job. Everyone has a job. Shrutika, Shruti Dobre, Prachi, everyone has a job, dude. Okay, and I don't have it. The things required to say this thing na, just imagine the failure I am being through. Okay, सबसे बड़ा दर्द ना मुझे तभी हुआ जब मैं मेरे father is actually a bit ashamed of me that he what is the only thing that I'm saying, and I didn't say anything. Okay, क्योंकि हाँ चलो ये एक failure है, this is the part of the failure and you have to face it. Okay, क्योंकि like let me tell you one thing ना, लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट होते हैं. ओके,
this actually moment now, this actually the things is actually happening around you is actually making me strong. हाँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा like बहुत ज़्यादा I'm broke. I'm broke from the inside, but still I have hope. Still I am hope that I can do better. I can do better. I can do better. I can do better. And every day, every time I wake up in the morning, I can do better. या बस मैं करना चाहता हूँ और मैं करूँगा. या I just know that कि I can do that. बस वो होप खुद में जिंदा रख कर मैं सुबह उठता हूँ और काम पे लगता हूँ यार. ओके, so this is the failure, dude. Okay, this is the like legit failure. Okay, और भी ज़्यादा failure सुनना मेरे से. Okay, like in 2016 I started doing a job in Khaparkheda power station. 2016, 17, 16, 17, 18, 19, 20, 4 साल बर्बाद कर दिए मैंने जॉब के ऊपर. 4 साल. नाउ आई रियलाइज दैट कि मैं जॉब के लायक ही नहीं हूँ. मेरे 4 साल वापस नहीं आने वाले. ओके, मैंने जितना भी एफर्ट लगाया उस 4 साल में, शायद मैं उतना एफर्ट यूट्यूब में लगा देता है उस वक्त, तो आज मैं कहाँ होता है. ओके, 4 years of my life was gone, legit gone. और ये जो 4 साल है ना बहुत ही क्रूशल थे यार. लाइक लेट मी टेल यू वन थिंग ना, कोविड केम एट द एज ऑफ 27 ना, उसके ऊपर उसके नीचे 4 साल लगा दो तो बेसिकली इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ 23 फ्रॉम एट द एज ऑफ 23, 24, 25, 26. ओके, ये जो एज होता है ना 23, 24, 25, 26, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साल होते हैं लाइफ के. ओके, यू आर गोइंग थ्रू फ्रॉम अर्ली 20s टू लेट 20s. ओके, ये जो साल होते हैं ना वहाँ पे आपको नहीं क्या अचीव करना पड़ता है चीज़ों को. आपके पास बहुत कुछ होता है, आपके पास पावर होता है, नशा होता है. नो वन इज़ एक्चुअली एक्सपेक्टिंग यू कि हाँ तेरे को जॉब करना है, हाँ तू करेगा. उस वक्त मैं जॉब कर रहा था. ओके, और नाउ आई रियलाइज दैट ना कि हाँ मैंने 4 साल क्लियरली बर्बाद कर दिए यार, बर्बाद कर दिए. दिस इज लाइक दिस इज द काइंड ऑफ लाइक अ बिग फेलियर फॉर मी. और भी ज़्यादा फेलियर सुनना है तो इट्स जस्ट लाइक द इंजीनियरिंग डिप्लोमा. ओके, आफ्टर द 12th standard, I have to like after the 12th standard, usually 12th standard के बाद इंजीनियरिंग डिप्लोमा डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाता है. इंजीनियरिंग डिप्लोमा इज़ अ 3rd year, बट फॉर मी इज़ अ 2 year. ओके, क्योंकि मैं 12th standard किया हूँ ना, सो फॉर मी इज़ एक्चुअली 2nd year एंड फाइनल ईयर. ओके, 2 साल का कोर्स मैंने 6 साल लगा दिए डूड. 6 साल. You get it, dude? This is also a failure. Okay, ये एक फेल्यूर है. ओके, दिस इज द ऑल्सो लाइफ. ओके, इससे भी और एक ज़्यादा फेल्यूर हो चुका है. ओके, इन 12th standard ना यूजुअली इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करने के लिए आपको PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में आपको 135 मार्क्स चाहिए तीनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर. ओके, बट इवेंचुअली मेरे तीनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर मेरे जो मार्क्स आए थे वो आए थे 111. बट एट दैट ईयर, at 2011, at that year, rule was changed, and rule in that rule says that कि you don't really need 135 marks to enter in engineering college. You need 120 marks. 120 marks. ओके, उस पे भी मेरा लक नहीं लगा डूड, क्योंकि मुझे आए थे 111. ओके, मेरे जितने भी सारे दोस्त थे ना, सारे के सारे दोस्त इंजीनियरिंग कॉलेज में गए.
सारे के सारे दोस्त. I was the only one who went in engineering diploma, dude. Biggest failure. Biggest failure. You wanted to see my failure? Okay, this is the failure. Okay, when I see this thing, like abhi main, like right now my eyes are literally like numb right now. But this is the thing. Okay, this is the failure I'm going through, and I'm still failure. I am still failure. कितना चूतिया हूँ मैं यार, कितना चूतिया हूँ मैं. ना ही मेरे साथ पढ़ाई ना हो पाई, 4 साल बर्बाद कर दिए मैंने. 2 साल का कोर्स मैंने 6 साल लगा दिया निकालने के लिए. एंड एट द एज ऑफ 30 मैं यूट्यूब पे ग्राइंड कर रहा हूँ, यूट्यूब पे घिस रहा हूँ खुद को. ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ वन होप कि मैं लाइफ में कुछ कर सकता हूँ. जस्ट बिकॉज ऑफ वन होप. So you wanted to see ना how I handle the failure. Dude यार, मैं करीब 30 सालों से फेल्यूर में ही हूँ. ओके, एंड एवरी डे आई वेक अप, आई एम एक्चुअली फेल्यूर, बट आई स्टिल वेक अप, I still do my thing, hoping that it will be something really good, and I'll still do. Failure. How I handle the failure. I just don't want to talk about this. यानी ऐसे बहुत सारी चीज़ें ना ऐसे दिख जाता ना मेरे को, तो fuck it dude, fuck it, whatever. Just like failure तो होता ही रहेगा लाइफ में. just like always thought that कि चलो यार, लाइफ में फेलियर है, कोई बात नहीं, सह लेंगे. या वी आई एम एक्चुअली लाइक वेरी काइंड ऑफ लाइक अ पर्सन कि हाँ चलो, लाइफ में फेलियर है ना. like why I'm actually so, I'm not crying, but actually I'm seeing lot of failure inside of my life. मैंने अब सारी चीज़ों को ऐसे एनालाइज किया, तब जाके ऐसा रियलाइज हुआ कि डूड यार, मैं कितना चूतिया हूँ यार, कितना चूतिया हूँ. Whatever. Next question. What do you think is the key to be happy and a successful life? I don't know. My mind is stuck on the failure things. My mind is actually, I can't think that key. Like, what if this question is actually asked by someone in the future, and I says that कि मैं life में इतना ज़्यादा failure किया है. It's just fucking 6 years. Jeez. Thank you.